Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. Today we are going to study a very important topic of mathematics in operations research, that is transportation problem. Now we are going to study the meaning of transportation problem. In transportation problem, generally we supply different units from origin to destination in such a way that cost of transportation is minimized, keeping in mind that time of the transportation is also minimized. So let us consider the meaning of transportation problem. So the transportation problem is to determine the number of units to be supplied from each of the origins to different destinations so as to satisfy the requirements of each destination with available supply at different origins, and the total transportation कॉस्ट इज़ मिनिमम, यानी कि हमें एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करना है और चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है, यानी जहाँ पे चीज़ें बनती है ओरिजिन्स, वहाँ से चीज़ें जहाँ पे पहुँचानी है डेस्टिनेशंस तक, वहाँ पे वो चीज़ें पहुँचनी चाहिए बट मिनिमम कॉस्ट के साथ। यानी ये है हमारा मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि थियरी में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और वो है जनरल फॉर्म या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो कि कुछ इस तरह से होगा। सपोज वी हैव m origins O1 O2 up to OI up to OM with available supply A1 A2 A3 up to AI to AM respectively, and n destinations D1 D2 up to DJ then DN with the requirements as B1 B2 BJ up to Bn respectively, where I is from 1 to m and j is from 1 to n. So here we have m origins and n destinations, and with that origins and destination we have supply A1 A2 up to am for different origins, and demand or requirements are B1 B2 Bn for different destinations. So the transportation table can be prepared as follows. So ज़्यादा कुछ टफ है नहीं, इसके अंदर हमें एक मैथमेटिकल फॉर्म देखना है जो कि हम कुछ इस तरह से देखने वाले हैं, और वो टेबल कुछ इस तरह से होगा। द ट्रांसपोर्टेशन जनरल फॉर्मेट इज एज फॉलोज। एज वी नो दैट वी हैव टोल्ड दैट वी हैव m origins O1 O2 OI up to OM, which can be seen on the in the table. Similarly we have n destinations D1 D2 up to DJ, and they are shown here. We have shown cost in the table C11 C12 C13. in general अगर हम कहें, if we say Cij, so Cij is the cost of supplying one unit from ith origin to jth destination. You can see it in the highlighted red part. Xij is the total number of units to be supplied from ith origin to jth destination, and from this we have supply and demand. We want to satisfy our supply and demand, and the formula of total minimum cost is as follows. So Cij, as we know that it is the cost of supplying one unit from ith origin to jth destination, and Xij is the total number of units to be supplied from ith origin to jth destination. Now we will study the different methods of solving any transportation problem. Methods of solving transportation problem are: first method is northwest corner rule, sometimes it is known as NWC rule in short. Second name is matrix minima method, it is also known as least cost method. Third is Vogel's approximation method, in short it is known as VAM. So now we will study our first method to solve any transportation problem, which is northwest corner rule. It is also known as NWC rule in short. In this method, the first allocation is made in
the northwest corner, that is in the upper left hand side corner of the cost matrix, that is the first allocation should be made in the 1 cell. So, it is only for the first allocation. After first allocation, each allocation should be made into the upper left hand side corner of the remaining cost matrix. To understand the full method, we will take one example, that is as follows. You can see that there are plants and warehouses are here. Supply demand is also given. आप देख सकते हो कि प्लांट्स दिए गए हैं G1, G2, G3, वेयर हाउसेज दिए गए हैं S1, S2, S3, S4, सप्लाई और डिमांड भी दी गई है एंड आप देख सकते हो कि दोनों का टोटल सेम है. और सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल अप्लाई करने के लिए हमें 1 सेल में जाना पड़ेगा, यानी जहाँ पे G1 और S1 सेल मिलते हैं उस सेल को कहा जाता है 1 सेल, जहाँ पे आप कॉस्ट 5 ऑब्जर्व कर सकते हो. तो एलोकेशन हम वहाँ पे करेंगे. अब एलोकेशन क्या होता है, व्हाट इज़ एलोकेशन? एलोकेशन मीन्स वी पुट मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स अमॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई में जो कम से कम नंबर्स है, छोटा नंबर हो, वो हम रखते हैं इन द सेल, उसे कहा जाता है एलोकेशन. यानी अगर 5 वाले कॉस्ट की जगह पे 1 सेल में एलोकेट करना हो तो डिमांड 22 है, सप्लाई 45 है, दोनों में छोटा नंबर यानी 22 है, तो हम 1 सेल में 22 यूनिट्स एलोकेट करेंगे. अब 22 एलोकेट कर देंगे तो डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है, अगर सप्लाई में बाकी बचेंगे 23 यूनिट्स, यानी कॉलम सेटिस्फाई हो जाती है, ऐसा कहा जाता है टेक्निकली. सो कॉलम में डैश किया जाता है, हम डैशेस कुछ इस तरह से करते हैं. फर्स्ट कॉलम में अब कोई डिमांड बाकी नहीं है. अब बाकी बचे हुए मैट्रिक्स में अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, यानी वो होगा 1-2 सेल के अंदर, जहाँ पे हम कॉस्ट 3 ऑब्जर्व कर सकते हैं. वहाँ पे सप्लाई 23 है और नीचे आप ऑब्जर्व कर सकते हो डिमांड 38, यानी दोनों में छोटा नंबर यानी 23. तो 23 हम एलोकेट करेंगे वहाँ पे. देन रो में, यानी कि आप देख सकते हो कि पहली रो में 23 यूनिट्स है जो कि सेटिस्फाई हो जाएंगे, और अब वहाँ पे रो के यूनिट्स ख़त्म और कॉलम में बाकी बचेंगे 15 यूनिट्स. सो उसी तरह से प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए अब अपर लेफ्ट कॉर्नर यानी इट इज़ इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यानी इट इज़ इन द 2 सेल. 2 सेल में हम एलोकेट करेंगे जहाँ पे 7 रुपीज़ कॉस्ट दी गई है. हम एलोकेट करेंगे 15 यूनिट्स डिमांड, 35 यूनिट्स सप्लाई, मिनिमम अमॉन्ग देम यानी 15 यूनिट्स अलोकेट किए जाएंगे एंड कॉलम सेटिस्फाई होगी और बाकी बचेंगे यूनिट्स 20. सो उसी तरह से आगे बढ़े तो 2-3 सेल के अंदर हमें यूनिट्स एलोकेट करने हैं 20 आउट ऑफ 26. सो 20 यूनिट्स हम रख देंगे, सो रो सेटिस्फाई हो जाएगी और बाकी बचेंगे 6 यूनिट्स डिमांड के अंदर एंड रो में हम कर देते हैं डैशेस. अब आखिरी 2 सेल जो बाकी है उसमें लेफ्ट कॉर्नर यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम में 6 यूनिट्स एंड 20 यूनिट में छोटा यूनिट यानी 6 हम रखेंगे, बाकी बचेंगे 14 यूनिट्स. सो इन द लास्ट सेल जहाँ पे आप 6 रुपीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, वहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड सेम है. कोई भी सम हो हमारे मेथड का, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, हम हमेशा यूनिट्स लास्ट सेल में सप्लाई और डिमांड के इक्वल ही ऑब्जर्व करते हैं. दैट मीन्स इन द लास्ट सेल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड दे मस्ट बी सेम. सो लास्ट सेल में हम 14 यूनिट्स अलोकेट कर देते हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो सॉल्व हो गया है. अब सॉल्यूशन लिखना है तो उसे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्साइजेस, जो कि हम आगे मेथड में समझ चुके हैं. तो फर्स्ट सॉल्यूशन वाइज लिखना है तो x11 विल बी 22, x12 विल बी 23, सिमिलरली x22 विल बी 15, x23 विल बी 20, x33 इज 6 एंड x34 इज 14. सो दिस इज़ आवर सॉल्यूशन. एंड अगर टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है तो टोटल कॉस्ट की फॉर्मूला होती है टोटल मिनिमम कॉस्ट z इज इक्वल टू डबल सिग्मा CIJ इंटू XIJ. और अगर ये कॉस्ट फाइंड करनी है तो आपको करना क्या है, जहाँ पे एलोकेटेड सेल है वहाँ पे हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स 5 इंटू 22, 3 इंटू 23, 7 इंटू 15, 6 इंटू 20, 8 इंटू 6 एंड एट लास्ट 6 इंटू 14. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग देम we can get our final total minimum cost which is rupees 536. So this is the overall solution by our northwest corner rule. यहाँ पे आपको एक बात खास ध्यान रखनी है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से जो भी हमें कॉस्ट मिलती है वो मिनिमम कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे हम कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते. यहाँ पे कॉर्नर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया है. इन दिस मेथड cost is totally ignored. Here we give importance to only
northwest corner. So we have better methods, इससे भी अच्छी हमारे पास दो methods है, and they are matrix minima and Vogel's method. So in the next lecture we are going to study matrix minima and Vogel's approximation method. Thank you. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.